In this lecture, we will discuss about types of sets. Types of set. So first we start with the empty set. Empty set, or you can say that null set, or you can say that void set. So we define as a set which does not contain any element. Does not contain any element is said to be null set or empty set or void set. For representation of this, so we write down as it is denoted as phi or empty bracket. So we use a curly bracket which is empty, so known as the empty set. Now we understand with the example. Example हम ले लेते हैं कि let a कोई set है such that जो नंबर x है वो लाई कर रहा है between 1 to 2, और इसमें हम मेंशन कर रहे हैं कि x क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर, x is a natural number. So is it possible? No, because there is no natural number which lie between 1 to 2. So that means this is empty set. So this is empty set, or we can say that phi. So there is no natural number which lie between 1 to 2. Now we can take another example. Let set A we can define as x such that x square is equal to 4 and x is odd. X is odd. So when we have x square equal to 4, so this does not give the odd value. So this not give the odd value, because when we solve this, so x square is equal to 4, so x gives us plus minus 2. So plus minus 2 is the even values. So this is the even value. So then we can say that the set A is equal to empty set or phi. Okay, so we already mentioned in the definition, हमने लिखा है उसमें कि which does not contain any element, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, that is the null set. और दो एग्जांपल हमने इसके दे दिए कि कौन सा सेट हमारा null set होता है. Now we move to the next definition. That next definition is finite set and infinite set. The next definition is finite set and infinite set. अब नाम से ही पता चल रहा होगा, फाइनाइट मीन्स काउंटेबल एलिमेंट और इनफाइनाइट मीन्स अनकाउंटेबल एलिमेंट. So we define as a set which contain countable elements or definite elements is called a finite set. A set which contains countable elements or definite element is called
finite set. अदरवाइज इसी में मेंशन कर देते हैं सेकंड डेफिनेशन को, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अगर जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स नहीं होंगे तो वो किसका एग्जांपल होगा? इनफाइनाइट सेट का। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। फॉर एग्जांपल, for example, let a equal to set of vowels, that means a, e, I, o, u. So this set having countable elements, so that this is called the finite set. So this is the example of finite set. English alphabets also countable: a, b, c, x, y, z, also countable. 26 English alphabets, so also countable. So that means this is also example of finite set. We can take another example: number of students. Number of students in a class. अब किसी क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे फाइनाइट होंगे ऑलवेज, दैट मे बी 40, 41, 42, 50, 61, 60, 65, 70, 80, so that will be the finite set. Number of student in university, number of student in a college. Okay, so these are the example of finite sets. Number of states in India is the example of finite sets. Number of states in India is finite set. ओके, आगे अदर एग्जांपल्स हम क्या ले सकते हैं? नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ऑल्सो एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। टोटल नंबर ऑफ प्रेसिडेंट हुए, फाइनाइट हुए। नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ऑल्सो विद द एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। नाउ वी शैल मूव टू द डेफिनेशन ऑफ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के लिए एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सेट ऑफ होल नंबर्स हो गए 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स हो गए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। Okay, so these are the example of infinite set. Now, after writing the definition of finite and infinite set, we move to the singleton set. सिंगलटन, जैसे नाम से आपको पता चला सिंगलटन, सिंगलटन मीन्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे ए सेट which has only one element is called singleton set, which has only one element is called singleton set. For example, set A we can write down as Lady Prime Minister of India. Is the example of singleton set. Second example we can write down as Lady President is not the part of singleton set because first Lady President of India Pratibha Devi Singh Patil and now second is Draupadi Murmu ji. So this is not the part of singleton set. So Lady Prime Minister of India is the part of singleton set. And we can take second example, that means Vice Chancellor of any university currently.
सो दैट में एक ही वाइस चांसलर होगा किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए करंट पोजीशन में। ओके। और टोटल नंबर ऑफ वाइस चांसलर्स हम कैलकुलेट करेंगे, तो दैट विल बी नॉट बी ए पार्ट ऑफ द सिंगलटन सेट। अब सेकंड एग्जांपल हम जैसे कंसीडर करते हैं कि एक्स सच दैट जो एक्स है वो लाई कर रहा है हमारा बिटवीन 2 to 4। So x between 2 to 4 means only single element होगा which will be 2. So this is the example of singleton set which contain only one element. अब आते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं कि जैसे हमने बोला कि जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट को हम करली ब्रैकेट में ब्लैंक ब्रैकेट से यूज करते हैं और हम यूज करते हैं फाई से। अगर हम इसी को ऐसे लिख देते हैं कि सो दिस इज द एम्प्टी सेट और नॉट, नॉट एट दिस टाइम दिस इज ए सिंगलटन सेट। ये अब एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा, ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर फाई, अब फाई क्या होगा यहाँ पर, वर्क एज ए एलिमेंट। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट। बट एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्प्टी ब्रैकेट से और फाई से, बट इज दिस पोजिशन वी रिप्रेजेंट दिस एज ए सिंगलटन सेट। नाउ after understanding singleton set, we move to the next definition, that is the equal set। अब इक्वल सेट, अब जैसे नाम है उसका इक्वल, अब इक्वल जब हम ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं इक्वलिटी का, तो एटलीस्ट हमारे पास दो सेट होने चाहिए, तभी तो हम इक्वलिटी चेक करते हैं। एक सेट को तो इक्वल नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर जब डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे तो हम लिख के चलते हैं, लेट ए एंड बी टू सेट्स, a and b be two sets, so then a means we write a set a is a and b, set a and b are said to be equal, set a and b are said to be equal if every element of set v is the element, is also the element of set a, element of सेट ए। मतलब जो सेट बी में एलिमेंट है वो सेट ए में भी एलिमेंट होंगे। एंड ऑल्सो every element of set A is also the element, मतलब वाइस वर्सा, ऑफ सेट बी। और जो सेट ए के एलिमेंट होंगे वो सेट बी में होंगे, जो सेट बी के एलिमेंट होंगे वो सेट ए में होंगे। देन वी कैन से दैट ए और बी आर इक्वल। सो वी कैन से दैट ए, set A, here we write down set A and B has have exactly equal element, equal or same element, we can say that equal and same element। फॉर एग्जाम्पल अब अंडरस्टैंड करते हैं इक्वल सेट के लिए, क्या जैसे ए इक्वल टू दे रखा है हमारा 1 2 3 4, तो जो सेट बी होगा उसमें भी वही एलिमेंट होंगे। अब हम इनका जैसे ऑर्डर चेंज कर दें, 4 3 2 1 कर दें, ऑर्डर चेंज करने पर उसके सेट की पोजीशन पे और सेट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स में सेम होनी चाहिए, और वही एलिमेंट जो ए के हैं वही बी में होनी चाहिए, जो बी के एलिमेंट है वही ए में होनी चाहिए। तो देन वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी, वी कैन से देन ए इज इक्वल टू बी। नाउ अदर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे ए इक्वल टू हमने ले लिया ए बी और सी हैविंग 3 एलिमेंट, बी हैविंग ए बी सी और डी 4 एलिमेंट। So we are here we have a D
is extra in B which is not in A, so then we can say that these two are not equal set. So these are not equal set. A is not equal to B. अब इक्वल सेट अंडरस्टैंड करने के बाद एक छोटी सी डेफिनेशन और आती है हमारी, कार्डिनल नंबर। ये कार्डिनल नंबर क्या होता है? तो कार्डिनल नंबर के लिए द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। उस सेट का कार्डिनल नंबर कहलाएगा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उन सेट में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेट ए है, सेट ए हमने लिया कि ए बी सी और डी, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज इक्वल टू 4, इट हैविंग 4 एलिमेंट्स, so the cardinal number of this set equal to 4. So we can take any example, we can just count the number of element in a set, so that is called the cardinal number. Now अब जब इक्वल सेट आ गया तो एक इक्विवेलेंट सेट भी होगा उसके साथ में। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, तो इक्विवेलेंट सेट के लिए लेट ए एंड बी be two sets, so then A set A and B are said to be equivalent if they have same cardinal number। अब यहाँ पे कार्डिनल नंबर यूज हो गया, सेम कार्डिनल नंबर। बस स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में, तो आपको ध्यान रखना है इक्विवेलेंट सेट कार्डिनल नंबर पर बेस्ड होता है और इक्वल सेट एलिमेंट्स पर, दैट मीन सेम एलिमेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वी कंसीडर एज, जैसे ए इक्वल टू ले लिया हमने 1 2 3 4, तो इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट इज 4। बी हमने कोई अनदर सेट ले लिया जिसके एलिमेंट हैं 7 8 9 और 10, जो इसका कार्डिनल नंबर होगा इसका भी कार्डिनल नंबर 4 होगा। तो ए और सेट बी का जो कार्डिनल नंबर है वो सेम है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे हमारा जो बेस्ड है, जो इक्विवेलेंट सेट हम बोल रहे हैं कि उसके इक्विवेलेंट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट उन दोनों सेट्स में 4 4 हैं, तो दैट आर द इक्विवेलेंट सेट। अब एलिमेंट उसमें कुछ भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। अब 7 8 9 10 के प्लेसेस पे कुछ और भी हो सकता था, जैसे ए बी सी डी होता, तो डजेंट मैटर। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इक्विवेलेंट सेट। Now we can take some example based on this. फर्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिवाइजिबल बाई 2, डिवाइजिबल बाई 2। अब सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर divisible by 2, so is possible? No, so that means set A is empty set, so there is no odd natural number which is divisible by 2। अब सेकंड आता है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ये तो नल सेट का एग्जांपल हो गया। अब सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो ये किसका एग्जांपल होगा? तो प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2,
तो अकेला प्राइम नंबर 2 ही होगा जो इवन प्राइम नंबर होगा. So that means we can say that A is equal to 2 even prime number. Otherwise 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. So all are the odd numbers. Only 2 is the even number. So this is the example of singleton set. This is the example of singleton set. Now, last example we can take as if A is equal to 2, 4, 6, 8 and 10 और बी सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर. एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर है और एक्स लेस देन इक्वल टू 10 है. तो पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर से तो बात नहीं बनेगी. यहाँ पर हमने लिख दिया पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो ये इक्वल हो जाएंगे. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू बी पॉजिटिव इवन इंटीजर पर. अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं तो वो तो 1 से 10 तक आ जाएंगे. दे आर नॉट इक्वल. Okay, hope you understand the types of sets.